everyone. I hope you all are doing well and आपकी AILET PG की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है and I know exam is around the corner. थोड़ा बहुत एंजाइटी हो रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का टाइम इसमें जा रहा हो ये डिसाइड करने में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं. So, when it comes to subjective portion of AILET PG 2023 examination, I would suggest you in this particular video that what you have to study, and we're going to see by seeing 2022 paper. All right. So first we are going to see whatever NLU Delhi asked in 2022 paper, and then we are going to see that what could be the probable topics जो आपसे आगे आने वाले NLU दिल्ली के AILET PG एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. All right. So first of all, just let me know that everything is perfect so that we can start with our video. Yeah. So just let me know that everything is perfect. My voice is perfect. The slides are visible properly. All right. So now here, as you can see on the first slide, that in this particular YouTube live, we are going to talk about the AILET PG subjective answer writing probable topics. All right. So first we'll start this session with this questions, right? Questions National Law University Delhi asked in 2022. So first question was from IPC. All right, and they asked about sedition laws, ठीक है, and constitutional validity of sedition at section 124A, ठीक है, and they mentioned that you have to write or you have to explain it, analyze it in light of judicial decisions. All right, when it is written that you have to analyze it in the light of judicial decisions, then it is important for you to mention case laws, not only the recent ones, but also the landmark ones. All right. Now, second is public policy is often considered to be one of the most contentious ground for setting aside or refusal to enforce an arbitral award. Now, this question was from Arbitration Act, all right, and setting aside arbitral award, that is section number 34 of Arbitration Act. वहां से ये सवाल पूछा गया. उसके बाद इसमें भी ऐड था critically analyze the statement clearly outlining approaches adopted by Indian judiciary in its utilization. Now, from here, you get to know that एलेट पीजी का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वहां पे दे फोकस मोर ऑन जुडिशियल डिसीजंस. सो यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है कि जो भी आपसे आगे वाले एलेट पीजी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हो सकता है जो रीसेंट एक दो साल में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं, जुडिशियल डिसीजंस आए हैं. हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट हो सकता है कोई ऐसा जजमेंट हो जिसकी वजह से किसी एक्ट में अमेंडमेंट हो गई हो या किसी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया हो. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट ईयर द क्वेश्चन वाज, is right to privacy a fundamental right? All right, so we all know right to privacy को लेके काफी सारे judicial pronouncement, important judicial pronouncement हो चुके हैं. All right, and यहाँ पे भी उन्होंने same किया है. They asked additionally that you have to discuss the question in the light of judicial decisions. All right, fourth was again from IPC. It was related to defamation. Fifth was here related to WTO. ठीक है, सो ट्रिप्स वेवर प्रपोजल जो इंडिया ने इनिशिएट किया था उसके बारे में पूछा गया था. इन सिक्स्थ इट वाज from Constitution of India, and they asked a doctrine called eminent domain doctrine. All right, and also discuss the limitation of the doctrine with the help of judicial decisions. Now, understand, ये जो doctrine है ये किसी जुडिशियल डिसीजन में ही
सुप्रीम कोर्ट के किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में डिसीजन में आया होगा, एंड दैट इज अ रीजन दे आस्क दिस क्वेश्चन। दैट शोज कि जो भी फ्रेजेस, जो भी डॉक्ट्रिन्स, जो भी चीजें केस लॉज में डिस्कस हो रही हैं, ऑलराइट, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर एलेट पीजी सब्जेक्टिव पोर्शन। देन सेवेंथ इज from international law, and here they ask discuss the principles governing the working of United Nations. All right, discuss the potential reform in the working of United Nations in the light of recent international conflict. Now that this question so shows that जो भी recent, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, जो रीसेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स न्यूज में रही हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर एलेट पीजी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8 was from this act called Biodiversity Conservation Act of 2002. Now understand, यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट की वर्किंग, ठीक है, एक्सेस एंड बेनिफिट्स रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट को एक्सप्लेन या क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला है। आई बिलीव ये सबसे इजी क्वेश्चन था, ऑलराइट, एंड जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और उसको इस एक्ट के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होगा, तो उसने काफी अच्छे मार्क्स फैच किए होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे है from consideration. Now you all know that out of 10 आपको AILET PG में सिर्फ एंड सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, एंड अर्लियर these questions were of 25 marks each. Alright, now अगर आपने 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, ऑलराइट, या जिसने भी वो एग्जाम अपीयर किया था, नाउ अंडरस्टैंड 9th क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को अपने लॉ स्कूल में भी आंसर किया होगा। हियर इट सेज, इज कंसिडरेशन एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? शुड कंसिडरेशन बी monetary in character? All right, discuss in the light of judicial decisions. All right, तो यहाँ पे आप सारे जितने भी आपको लैंडमार्क जजमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट पता है उसको मेंशन कर सकते हो, सेक्शंस पता है तो उनको मेंशन कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस दे सकते हो, एलिमेंट्स लिख सकते हो। ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन वाज अगेन फ्रॉम आर्बिट्रेशन एक्ट, एंड हियर इट वाज, दो मीडिएशन इज कंसिडर्ड to be a very effective method of alternate dispute resolution, attempt to secure statutory recognition of its processes and outcomes have not yielded satisfactory result. Would you agree with this assertion? Now they are asking your opinion. Respond in the light of Mediation Bill 2021. Now understand, ये पेपर आपका 2022 में हुआ था, and there was a bill passed in 2021. They asked the same. So that means जो भी recent past में कोई एक्ट, कोई लेजिस्लेशन आया है, कोई बिल पास हुआ है जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में था या न्यूज में था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ क्लियरली आर्टिकुलेटिंग द कंसर्न दैट arise with utilization of mediation as a method of ADR and propose statutory solution. All right, now in this slide आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ मैंने सब्जेक्ट वाइज टेबल बना रखी है। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको आईपीसी दिख रहा है, आईपीसी से इन द ईयर 2022 2 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आए थे, आर्बिट्रेशन एक्ट से 2 क्वेश्चंस आए थे, एंड इंटरनेशनल लॉ या यूनाइटेड नेशन से 2, एंड कॉन्ट्रैक्ट से 1, एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट से 1। इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको ये पता लगता है, as you just have to attempt 2 questions out of 10, ठीक है, आपको 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आप किसी भी 3 एक्ट्स को पिक करके उनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको सारे एक्ट्स, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। अगर आप मेरे से पूछें कि मैम क्या पढ़ना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू
जस्ट जो भी आईपीसी में टॉपिक्स रेलेवेंट रहे हैं, जिन पे जो न्यूज़ का टॉपिक बने हैं, जिन पे जजमेंट्स प्रोनाउंस हुए हैं, आप आईपीसी से वो सारी चीज़ें कवर करके जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन से सारे जजमेंट्स कवर करके जाएं, रीसेंट अमेंडमेंट कवर करके जाएं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से अच्छे से प्रिपेयर है तो उसके जो लिस्ट बना लें 5 से लेके 7 जजमेंट्स की, जो जजमेंट जनरली हर जगह आप हर एक आंसर में पुट अप कर सकते हो, उसे कंप्लीट करें, बैक को रिवाइज करें। इन माय ओपिनियन दैट इज सफिशिएंट। सेकंड, अगर आपका आईपीसी स्ट्रांग नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज कि आप आर्बिट्रेशन एक्ट में आप जो भी रिसेंट 1-2 साल में चीजें न्यूज में रही हैं, जनरली सेक्शन 34 पब्लिक पॉलिसी सेटिंग असाइड, यही सारी चीजें, या फी को लेके एक कंटेंशन था जिसपे एक जजमेंट आया था, ये सारी चीजें आप कवर करके जाए। इन माय ओपिनियन आपको इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, या ऐसे छोटे एक्ट्स में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल सी what are the expected questions for AILET PG 2023 examination? All right, so यहाँ पे पहला expected question लिख रखा है, throw light on right to zero FIR and explain other rights available to rape victim with the help of case laws. Now, रेप विक्टिम या जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सो दैट मेक्स this particular question important, या this particular topic important for your AILET PG examination. Second is the emerging danger to the historic 50% ceiling limit. Now, ये particular question reservation से deal करता है, ठीक है, and reservation you all know was in news, मराठा reservation की वजह से, जर्नैल सिंह का जो केस था उसकी वजह से, so on and so forth, काफी hue and cry रहा है, different reservation, vertical reservation, horizontal reservation, एक्सेट्रा reservation उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो इन माय ओपिनियन रिजर्वेशन से रिलेटेड सारी चीजों को एक पॉइंट वाइज में पहले से तैयार कर लो और उस पेज को रिवाइज करके जाना। ऑल राइट, नाउ एंड डू नॉट स्किप द केस लॉज। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे है, दैट इज रिलेटेड टू एमटीपी एक्ट, ठीक है, या एमटीपी केस। In the recent past, we have seen an enormous spike in the evolution of concept of transformative constitutionalism. Throw light on a transformative constitutionalism with special reference on a newly decided MTP case. Now you have to understand कि ये particular case law, क्योंकि ये काफी डिस्कशन में था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो एमटीपी एक्ट है, ठीक है, एमटीपी एक्ट मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस वाज आल्सो इन न्यूज। और यहाँ पे जो मेजर चेंज किया गया है, वेयर दे सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड हस्बैंड with partner and made this particular act more progressive, and as it is again related with rights of women, तो ये important हो जाता है। then यहाँ पे fourth जो probable question है, that is recent statements sharp and strident from India's Minister for Law and Justice Kiran Rijiju on an apparent lack of transparency with the collegium, all right, appointment of judges to Indian courts have been met with a dignified response from India's 50th Chief Justice D.Y. Chandrachud. Throw light on the appointment procedure of the judges and on the jurisprudential aspect of doctrine of separation of power. Now understand, कॉलेजियम पे या अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिसेस जो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द अमेरिकन रियलिस्ट पुट too much emphasis upon the role of judges in
Law. Explain the thoughts of American school along with the counterpart Scandinavian school. Now, this is something जहाँ पे as I mentioned कि जो भी international दो countries के बीच में जो चीजें हो रही हैं वो important हो जाती हैं तो वहाँ पे क्योंकि this was in news, this has been discussed, right? तो ये important हो जाता है. Next is in this growing era of rapid digitalization, different sorts of crime have also been developed, and one such is cyber defamation. Now cyber defamation अपने आप में एक important topic है, ठीक है? Defamation IPC में important हो जाता है, and they already have asked a question in the year 22 related to the same, but ऐसा नहीं है कि question repeat नहीं हो सकता है. So in that case आपको इसको prepare करके जाना है. Next is during the uh, Ramadan genocide, which saw the killing of ethnic minorities, Tutsis, one of the most used uh, propaganda tools to spew hatred against the Tutsis was the Rwanda radio, which broadcasted insightful anti-Tutsis propaganda. In light of the above statement, throw light on the position of hate speech. Now, understand यहाँ पे hate speech, ठीक है? So अगर मैं hate speech की बात करूं, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब इसको इस पर्टिकुलर टॉपिक से जोड़ के यहाँ पे पूछा गया है. यहाँ से ऐसा नहीं है कि यही उठ के क्वेश्चन आ जाएगा, सो डोंट थिंक कि यही क्वेश्चन आ सकता है, बट इस क्वेश्चन के आसपास से जो यहाँ पे मैं आपसे टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ उसके आसपास से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. देन एट प्रेजेंट India is struggling to provide a safe place to the women of the country who are often becoming victims of crime like rape. Considering this, mention the rights of rape victim. Now understand, as I already have mentioned, all the all the laws, all the acts related with all the case laws जिसमें women right डिस्कस किया है या रेप विक्टिम को जो चीजें मिलनी चाहिए वो डिस्कस की हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल पार्टीशन. ठीक है, सो विनीता शर्मा केस यू ऑल नो, सो उससे जो नोशनल पार्टीशन की बात उठी थी, ठीक है, या जो अमेंडमेंट हुई थी वो यहाँ पे पूछा गया है. नेक्स्ट इज speech that carries no meaning other than the expression of hatred for some group, such as a particular race, especially in circumstances in which the communication is likely to provoke violence, is called a hate speech. Now, again, this question is also from hate speech. All right. Now, 11 जो question है here, this particular question is from prisoner's stand. ठीक है, so over 75% of India's prison population are under trials, while overcrowding in Indian prison stands at 118%. These stark realities are often cited to represent the scale of the crisis in India's criminal justice system. All right, so यहाँ पे कमेंट ओवर द नीड ऑफ बेल रिफॉर्म. ठीक है, सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे जजमेंट्स दिए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू रिलीज द प्रिजनर्स जिनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है, सो वो आपको यहाँ पे कोट करने होंगे. नेक्स्ट इज एवरी पर्सन शेल हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी. This right shall include the right to choose the time of one's death and to receive medical and pharmaceutical assistance to die painlessly. No physician, nurse, or pharmacist shall be held criminally or civilly liable for assisting a person in free exercise of this right. All right. Now, right to die. ठीक है, right to die, right to life. ठीक है, या right to die comes under section 21 of Indian Constitution or not. ये काफी टाइम से there's a series of judgment. लिविंग विल का जो कॉन्सेप्ट है, पैसिव यूथनेशिया का जो कॉन्सेप्ट है, अरुणा शॉनवॉक का केस है. ऑलराइट, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको क्रोनोलॉजी वाइज सारी चीजें याद करके जाना है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस. ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस
प्रेस एज कंसिडर्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके लाइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफी डिस्कशन चला है। 14 is present your opinion on the procedure involving status of mediation in India। दो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फिर से नहीं रिपीट हो सकता। यहाँ पे 15th क्वेश्चन है, environment is the wellspring of living and non-living life on earth like water, air, soil, and so on, and decides the nearness, advancement, and improvement of humankind and every one of its exercise. In light of this, discuss the dynamics of environmental jurisprudence. All right. Now, when I say environmental jurisprudence, तो आपको इसको पढ़ के जाना है इससे रिलेटेड, जैसे कि लास्ट 2022 में, ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ऑलराइट, तो ये पार्ट है आपका एनवायरमेंटल लॉ का। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज प्रेजेंट योर ओपिनियन ऑन द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग स्टेटस ऑफ मीडिएशन इन इंडिया। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज dilemma over constitutionality of sedition and its devastating effects। तो अगेन सेडिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड 18th इज emerging tussle between the legislature and judiciary, अगेन कॉलेजियम वाला। इसको किस और तरीके से पूछा जा सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 19th जो क्वेश्चन है दैट इज efficacy of draft digital personal data bill। नाउ एज वहां पे आपसे 2021 का बिल पूछा गया था, तो यहाँ पे देयर इज अ बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, उससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 20th here is contradictory viewpoint of judiciary on Maratha reservation। I already have mentioned that reservation itself becomes a very important topic। सारे केस लॉज, reservation के सारी सीलिंग लिमिट, ये आपको फ्रॉम मंडल कमीशन टू टुडे सब कुछ पढ़ के जाना है। 21 is effects of section 66A of IT Act 2000, ठीक है। Now next is from religious sentiment या right to religion। तो you all know that when of meat, ठीक है, ये एक न्यूज का टॉपिक रहता है, ठीक है, तो यहां से भी सवाल एक्सपेक्टेड है। मैरिटल रेप, क्योंकि ये भी रिसेंटली न्यूज में काफी रहा है, काफी सारे डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस ने इसको डिस्कस किया है। सो दैट मेक्स मैरिटल रेप इटसेल्फ इंपॉर्टेंट एज अ टॉपिक फॉर क्लैट पीजी सब्जेक्टिव पोर्शन। एंड लास्ट टॉपिक हियर इज कैन अ पर्सन हु इज ineligible to be arbitrator nominate another arbitrator। So as I mentioned, arbitration act में section 34 public policy, all these things are important, and with that appointment of arbitrator also becomes important। All right, so I hope ये सारे टॉपिक से आपको चीजें समझ आई होंगी। आप लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग दैट यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट टू। सो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कुछ 10 टॉपिक्स, ठीक है, 10 टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं एंड यू जस्ट हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग दोज नोट्स, ताकि वहां पे कुछ भी आता है तो आप उस आंसर को कॉम्प्रहेंसिवली सारी चीजें जो आप पढ़ के गए हो, केस लॉज, एलिमेंट्स, प्रोविजंस, सब कुछ incorporate करके आंसर कर पाओ। Now, any doubt, if anyone has any doubt related to AILET or CLAT PG examination, you're most welcome to ask. All right. And one more thing, which is an announcement that we are starting CLAT PG masterclass. All right. CLAT PG masterclass, which we're going to take 12th, 13th, and 14th of December. You can enroll yourself in the same by clicking on the link given in the description box. All right, so that's it for this video. Let's meet in the next video. Till then, bye bye, keep studying. Bhumika Indori signing off.